Hey, what is up, guys? Welcome back to another inspiring episode of Insights That Inspire. And today we have a very special guest on the show. Her name is Bhavya. She's a mental health therapist, expert and psychologist. And इन्होंने अभी तक काफी सारे लोगों को उनकी इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व करके उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। एंड आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि अभी भी सोसाइटी में एक टैबू बना हुआ है। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं लेकिन ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं। एंड ये प्रॉब्लम्स हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप इशूज एंड मच मोर। सो अगर आप भी इन चैलेंजेस में से कोई सा भी एक चैलेंज फेस कर रहे हैं, लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इशू, देन दिस पॉडकास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड। एंड Bhavya, welcome to the show. I'm super duper excited to have deeper conversation, in-depth conversation, and to know your experience. And I'm pretty sure that people, those who are going to watch it, they are going to love it. They are going to get a lot of insights. So welcome to the show. I'm super duper excited. How are you doing? I'm doing good, Mohit. Thank you so much. I'm All also right. excited to be here. Yeah. Yeah, great. So here is my first question, Bhavya. As you are a mental health expert, psychologist, and like how your journey got started, like was there any turning point in your life which made you feel, okay, this is what you are meant to do? It did not start as this is what I was meant to do, but like you and I and everybody as kids were wired to be successful, correct? Mm, So along with that, it started with a lot of curiosity and interest. Because जब जैसे ही बड़े हुए थोड़ा सा क्लैरिटी जब आने लगा तब पता चला कि हाई अचीविंग लोग could be my elder siblings, cousins, could be my parents, could be people around me. उनको देखे पता चला कि हाई अचीविंग लोग भी इंटरनली थोड़ा तो स्ट्रगल कर ही रहे। सो सक्सेस के बाद भी एंजाइटी, ब्रेकडाउन्स, बर्नआउट्स ये बहुत कॉमन था जो मैंने नोटिस किया। सो मुझे लगा कि अगर हम फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी दे सकते हैं तो इमोशनल और मेंटल हेल्थ को क्यों नहीं। आई फील इट गोज हैंड इन हैंड एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्चिंग एंड डिसाइडिंग कि इफ दिस इज समथिंग आई कैन डू फॉर फ्यूचर टू हेल्प, व्हाई नॉट। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ओके, ग्रेट। अभी आपने एक पॉइंट बोला था कि काफी सारे हाई अचीविंग लोग हैं, वो एक्सटर्नली तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा खुश है लाइफ के अंदर, लाइक करेक्ट। सक्सेस सक्सेस सक्सेस, एवरीथिंग इज हैपनिंग सो स्मूथली, बट या इंटरनली दे आर नॉट हैप्पी। सो कैन यू टेल मी द रीजंस जो हाई अचीवर्स है, दे आर डूइंग गुड, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी इनसाइड? इट्स it's not the fact that I think that they're not happy, but थोड़ा struggle रहता है, correct? So ओके। if there's a high achiever, uh, generally वो perfectionism से काफी होता है कि oh I have to be at this level or I have to perform at this level, and because बचपन से ये रहा है कि oh आपको first आना ही है क्लास में, things like that बचपन से काफी रहा है। almost every parent, and I'm not saying parents की गलती है, they were also taught that way, correct? जो आप सीखते हो आप सिखाते हैं, so उनको भी and they also want us to succeed in life, correct? So for that career, and it was very important. So we somehow start believing, or we as baby somehow start believing कि if we're not good at par, then we're not good enough. तो ये चीज इवन आप सक्सेस होने के बाद भी there's somewhere in the back of the mind कि am I doing enough, or that somehow creates a little bit of anxiety, I feel. Basic. ओके। Making sense? Like, am I या making sense? बिल्कुल Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। एंड काफी सारे लोग हैं जो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, मेंटल मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, Hmm. बट वो थेरेपी लेने से डरते हैं। सो कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दिस फियर? Why people fear therapy could be a lot of reasons. First, I think लोग therapy से डरते हैं because they feel that something's wrong with them. Correct? So if you have a headache, आप दवाई लेंगे, right? या तो अगर आप फिजिकल प्रॉब्लम्स को आप अप्रोच करने में नहीं डरते तो फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों? इट्स जस्ट द सेम थिंग। क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर माइंड एंड योर इंटरनल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दे हेल्प यू, करेक्ट? दे हेल्प यू प्रोसेस थिंग्स, दे हेल्प यू डे टू डे थिंग्स। सो दैट फियर इज वेरी देयर कि ओ मेरे साथ कुछ गलत है, या देयर इज अ वेरी बिग स्टिग्मा, वल्नरेबिलिटी है जिसको वीकनेस समझा जाता है। सो सबसे बड़ा फियर इज लोग क्या कहेंगे, या मुझे जज किया जाएगा, या मुझे वीक समझा जाएगा। बट दैट्स नॉट हाउ इट इज। काफी बार ये भी होता है कि ओ अगर मैंने स्लो डाउन किया अपना प्रोसेस और सोचा सोचा तो शायद जो सक्सेस मिल रही है वो चली जाएगी, क्योंकि आई विल गो इनटू अ स्पाइरल एंड एवरीथिंग। सो अ लॉट ऑफ रीजंस आई फील इज व्हाई पीपल फियर थेरेपी। बट एक्चुअली अगर अनप्रोसेस्ड इमोशंस काफी हद तक हिट हो जाते हैं, लाइक हाई हो जाता है, तो ये प्रोडक्टिविटी गेट्स साइलेंटली किल्ड, क्योंकि फिर आपको मोटिवेशन नहीं रहता है, बिकॉज जो चीजें हैं वो ओवर पावर करने लगती है। सो आई डोंट थिंक पीपल शुड फेयर थेरेपी, दे शुड actually approach it with a lot of curiosity and understanding that okay, if I can solve this starting में, so it'll be a better thing. That's it. Making sense? Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर हम इस प्रॉब्लम को लेट सपोज ओवर द टाइम इग्नोर करते जाते हैं, क्योंकि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज, दे आर Hmm. वर्किंग प्रोफेशनल्स, दे आर फेसिंग मेंटल इश्यूज, स्टिल दे आर कीप डूइंग द थिंग्स, डेली ऑफिस Hmm. जाना, काम करना, दे आर कीप डूइंग इट, Hmm. दे आर कंप्लीटली इग्नोरिंग इट। इफ दे Hmm.
दे आर इग्नोरिंग इट, और वो लंबे समय तक इसको इग्नोर ही करते चले जा रहे हैं, देन व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज जो उनको अगले 5 साल में, 10 साल में फेस करने को मिल सकते हैं? अगेन इट्स डराने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंसेज एंड एवरीथिंग इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। लाइक हम्म, मैंने डोलो का एग्जांपल दिया, सो दैट इज समथिंग कि अगर आपको फीवर हो रहा है तो आप डोलो ले सकते हो, दैट इज कॉमन फॉर एवरीबॉडी। बट विद साइकोलॉजी या विद मेंटल हेल्थ इट इज वेरी वन पर्सन टू वन पर्सन। कुछ चीजें हैं जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लग सकती है जो आपको नहीं लग सकती है, शायद फॉर एग्जाम्पल, या इट गोज लाइक वैसे हर एक लोग के लिए अलग रहता है। बट मेजर थिंग्स ये रहता है कि आप यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग अ लॉट, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, या आपको अगर आप बिना अपने आप फीलिंग्स को प्रोसेस किए आप बस वही कर रहे हो, तो आपको बर्नआउट हो सकता है। मतलब फिर आपको काम करने की इच्छा नहीं रहेगी, फिर वो लगता है कि क्या ही पॉइंट है, ये हो सकता है। फिर आपको आपके रिलेशनशिप्स में थोड़ी इरिटेबिलिटी हो सकती है कि अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो अरे यार नहीं समझ रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो आप, ये हो सकता है। कांस्टेंट मेंटल फटीग रह सकती है कि क्या ही पॉइंट है ये सब चीजों का, दैट फीलिंग दैट वी गेट समटाइम्स कि there's no point to it, वो हो सकता है। आप फंक्शन कर रहे हो, आप डे टू डे, बिकॉज आपको ऑब्वियसली इट्स अ रूटीन, पैसे कमाने हैं, बिकॉज फॉर द एक्सपेंसेस ईएमआईज भरनी है, यू आर फंक्शनिंग बट यू आर नॉट फीलिंग फुलफिल्ड अंदर से कि ओ आई एम डूइंग समथिंग फॉर विथ माई लाइफ, वो फीलिंग चली जाती है ओवर द टाइम। If you see, these are some of the examples. okay, okay, so Bhavya, let's suppose any person is facing like mental health issue, stress है, anxiety है, depression है, Hmm. so what is the action plan? Like अगर कुछ आप action plan और strategy techniques अगर share करें so that that person can get quick relief. Oh, oh, okay. So you want like immediate technique, just Yeah, कुछ ऐसी oh, strategies, yeah. yeah. So if there is anxiety, if you're anxious right now, you can regulate with your breath. आपकी सांस is very important. सांस is very important. So you regulate with your breath. It's very simple. There's one technique where you can inhale for 4 seconds. So you breathe in for 4 seconds. You hold for 4 seconds, and then you exhale. सांस बाहर छोड़ेंगे आप for 6 to 8 seconds. What this does is it tells your mind, it gives your brain a signal that you are at peace. There's no problem. Like it's just tricking somehow, somewhere. And it helps. It helps if you do it like 10, 15 times. वो जो आपकी brain waves जो oh my god, so much tension, it starts to calm down. So longer exhales actives your parasympathetic nervous system that signals safety. वैसा. If you can't think strategically, if your nervous system is like feels threatened, you can try this. Do you want me to give you one more? I can give you one more technique. Yeah, sure. Yeah. So this technique is called as the 5-4-3-2-1 technique. As soon as you start feeling that anxiousness within, या आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, आपको palpitations होने लगते हैं, your hand starts sweating, वो जब feeling रहती है, this is called a 5-4-3-2-1 technique. It's simple where जैसे ही होने लगता है, you start taking deep breaths, but along with that, you distract your mind, you focus on other things, your external things. So you start focus on 5 things that you can see around you, and you start naming them. So 5 things that you can see around you, 4 things that you can touch around you. Could be the table, could be the window, could be your hands, that feeling. And once you start naming, I can touch this, I can touch this. 3 things that you can hear around you. क्या आवाज सुनाई दे सकती है आपको? जैसे मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, मुझे अपनी खुद की आवाज सुनाई दे रही है, things like that. 2 things that you can smell. What can you smell around you? If there is whatever shampoo bottle around you, you smell that. And one thing that you can taste, that you can eat. So this brings your nervous system back to the present moment. आप जहाँ पे हो, आपकी surroundings में. Anxiety, so anxiety is something that you are worried about future, correct? So Yeah, grounding करने से, यही टेक्निक करने से, it brings you back to the present. वो जो अंदर का जो थ्रेट रहता है वो रिड्यूस कर देता है. So this is something that you can do. very nice. एंड अगर किसी पर्सन को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, लाइक दीज आर क्विक क्विक स्ट्रेटजी जो वो इम्प्लीमेंट कर Yes. सकते हैं, बट इट इज नॉट अबाउट कि उनको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा, बट सो इफ दे हैव टू गेट द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, देन हाउ मच टाइम डज इट टेक यूजुअली टू गेट द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक कंप्लीटली वेप्ड आउट करने के लिए? एक तो ये चीज है कि वो कम्प्लीटली वाइप आउट नहीं होता है, करेक्ट? इट्स ओके, नॉट कि वो अगर आप पेन से लिख भी रहे, पेंसिल से लिख भी रहे पेपर, आप इरेज करेंगे एटलीस्ट वो नीचे, दैट्स स्टिल देयर, राइट? सो यू आर ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस. वो एंड कंप्लीटली वाइप आउट इज नॉट द फैक्ट कि आप भूल जाएंगे चीजें. यू विल लर्न टू आउटग्रो इट, यू विल लर्न टू डील विद इट. अगर नेक्स्ट टाइम कोई थ्रेट जैसा आया भी, तो यू नो दैट मैंने ये डील किया है पहले से, इट्स गोइंग टू बी फाइन, आई एम गोइंग टू बी फाइन. That happens. That is what therapy is like. It gives you the strength and the power to not let that specific trigger or situation control you. Making sense? या Vesa. या And it really depends on person to person. There are some people who are very proactive, who reflect कर सकते हैं,
अंदर सोच सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं। कुछ लोगों को वहां टाइम लगता है, बट वंस दे स्टार्ट डूइंग दैट देन इट्स क्विकर। सो टाइमलाइन इट्स डिफरेंट फॉर पर्सन टू पर्सन। ओके। एंड काफी सारे लोग कभी समझ ही नहीं पाते, लाइक देयर आर सो मेनी वर्किंग प्रोफेशनल्स, उनको नहीं समझ में आता है कि ये नॉर्मल स्ट्रेस है या फिर एक सीवियर स्ट्रेस है या एंजाइटी है। सो हाउ दे कैन डिफरेंशिएट इट, लाइक कि उनको थेरेपी की जरूरत है या फिर नहीं है? As soon as you feel ke you're questioning, should I take therapy or not, that itself is data. If it is interfering with your daily function, that's your sign you should take it. And to answer your question, can I answer it with just example के stress versus या anxiety अगर अपन बात करें तो वैसे just for clarity या kind of बिल्कुल, thing. या श्योर। So two things. Obviously, we can't talk about stress also, anxiety, trauma. सब एक साथ बात नहीं कर सकते. We can take two things. So stress versus anxiety, if we take, so stress is response to pressure, ओके। and anxiety is anticipation of threat. कुछ हुआ नहीं है but फिर भी अंदर से like you know that feeling. So stress basically resolve हो जाता है when the situation ends. Deadline खत्म, stress खत्म. या Anxiety continues in the body. So if you're constantly in that fight or flight without real danger, that is anxiety. And as soon as you realize that ये anxiety हो रही है, you need to get it. You need to start figuring out why. And for that, you should start therapy. ओके। एंड काफी सारे लोग इस प्रॉब्लम से बचपन से ही डील कर रहे होते हैं, लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमा बोल सकते हो आप इसको। सो Hmm. इफ दे हैव द चाइल्डहुड ट्रॉमा, देन उनके लिए उस लाइफ को जीना एक नॉर्मल चीज हो जाती है, बिकॉज नाउ Hmm. दे आर यूज टू इट। सो हाउ दे कैन फाइंड इट आउट, लाइक इफ दिस इज चाइल्डहुड ट्रॉमा और they are absolutely normal? Uh, most of the things are childhood trauma. Okay. Unresolved childhood trauma is basically unresolved trauma. Yeah. करेक्ट, जो अनरिजॉल्व हुआ नहीं है, जो रिजॉल्व हुआ नहीं है बचपन में, करेक्ट. सो अनरिजॉल्व ट्रॉमा शो अप एज पैटर्न्स इन आवर लाइफ. सो हम सेम रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नॉट हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ योर फादर, सो यू डोंट रियलाइज बट विलिंगली अनविलिंगली वॉलंटरी अनवॉलंटरी वो रिफ्लेक्ट होती है व्हेन यू ट्राई टू कम्युनिकेट विथ समबडी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सम फादर दैट यूज्ड टू बहुत ज्यादा चिल्लाते थे, लाइक इमोशनली बहुत ज्यादा अब्यूजिव रहते थे. तो जब आप बड़े हो रहे हो और शायद यू हैव अ बॉस हु लिटिल शॉर्ट टेम्पर्ड, और वो चिल्ला के बात करता, फ्रीज हो जाते हो. करेक्ट. सो इवन आपको लगता है कि नहीं, मैंने पीस बना लिया है, या वो चाइल्डहुड की चीजें है, नो नो, इट स्टिल शोज अप इन पैटर्न्स. दिस इज लाइक वैसे. या फिर फियर ऑफ अबैंडनमेंट. अगर इफ यू नॉट हैड अ वेरी स्टेबल चाइल्डहुड, एंड दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, ओके. इफ यू नॉट हैड अ वेरी स्टेबल चाइल्डहुड, इमोशनल सपोर्ट वाइज, या बहुत ही ज्यादा आपको ऑन टोज रहना पड़ रहा है अपने चाइल्डहुड में कि ओ अभी कुछ चिड़ेगा, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, वो वाला. तो व्हेन यू ग्रो अप एंड यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो वो आपको कहीं ना कहीं, आई एम नॉट सेइंग फुल टाइम रहता है, बट कहीं ना कहीं there's this very could be very slight or could be very strong fear of abandonment रहता है कि ओ my partner is not replying to my calls, he must not want to be with me. But your partner could be just busy. So that's what I'm saying. So your unresolved trauma, your childhood trauma shows up as patterns in your adulthood. So that is what you need to understand. That is what you need to address and get out of. नहीं तो आप बोल रहे हो कि बचपन में हो गया मेड पीस विद इट. It doesn't happen that way. Like you have to address it. नहीं तो pattern, and that is how you understand. As a pattern वो repeat हो रहा है, कैसे हो रहा है, or what do we do about it? And if you don't understand, that is where therapy comes into the picture, where your therapist will sit with you, will help you. Okay, this is something that has happened in the past with you. Things like that. That's all. Okay. Am I And making sense? yeah, Answer? yeah, Yeah. yeah, yeah. Okay. And if any person उसको childhood trauma है, and that हाँ. person is ignoring his trauma or her trauma, and that हाँ. person is married, उस बच्चे हैं, kids हैं, everything, हाँ. and वो trauma अभी तक unresolved है, let's say. Okay. हाँ. So how is it going to impact his or her kid's life? uh, Again, that also depends from a lot of things, like depends on a lot of things. अगर बचपन में उनको किस टाइप का चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, अगर उन्होंने इग्नोर नहीं किया है, तो वो क्या पास डाउन करते हैं, उनको कितनी अवेयरनेस है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना एक्सेप्ट करना है. थिंग्स लाइक दैट. सो आई ऑलवेज बिलीव देयर आर 5 स्टेप्स. आप किसी को सुनते हैं, आप अक्नॉलेज करते हैं वो चीज, आप अंडरस्टैंड करते हैं वो चीज, आप एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद देयर इज एन एक्शन. सुनने के बाद सीधा एक्शन नहीं होता. यू नीड टू एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो व्हाट इज गोइंग ऑन. तो Yeah. आप कौन से स्टेज में हैं, उस हिसाब से. अगर आपको कोई चीज का ट्रॉमा रहा है और आपके बेबी ने आके आपको कुछ बोला है, पर वो ट्रॉमा रिलेटेड आपने सिर्फ सुना है, अगर आपने वो चीज एक्नॉलेज और एक्सेप्ट नहीं किए, तो आप एक्शन में कुछ नया या कुछ चेंज अपने बेबी को पास डाउन नहीं कर पाएंगे.
वही चीज पास डाउन होगी to their babies also. So that is something that the person needs to work on ideally. नहीं तो फिर your baby will also start overthinking or start being very anxious that, oh, I can't talk about this with my father, for example, or I can't talk about these topics with my mother. And then the child starts seeking for validation बाहर. Yeah, the parents, that's supposed to be the safe space, वो नहीं रहता है फिर. That is why there's a lot of rift, no, between parents and babies. That is why there's a lot of space, और कि यार ये चीजें तो मैं अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर पाऊंगा, जाने दे. For example, these things. Okay, and some people think that childhood trauma सिर्फ relationship को destroy करता है, but somewhere it is not. It destroys so many more things like कि financial situation. So how a childhood trauma is connected with a person's financial situation? It depends on what kind of things that you suffered. So if you, how do I make it sense? Make it make sense. A lot of overthinking, chronic overthinking. That is something that destroys your, or not destroys. Destroys is a very strong word. It affects your financial goals also. Correct. Uh, and constant mental fatigue. मतलब it's आप कॉन्स्टेंटली वही सोच रहे हो, वही कर रहे हो, या फिर आपका will to make the decision, will to put in the efforts, वही खत्म हो जाता है. So you stop, sometimes you stop working only के कोई point नहीं है, या sometimes you settle के ठीक है आ रहा है इतना. वो जो drive होती है to success, that also sometimes goes for a toss. That also somehow somewhere deals or leads to the money problems, or that वो growth नहीं है वैसे. Okay. And क्योंकि अभी तक काफी सारे लोगों की आपने हेल्प किया है to transform their life and solve all these challenges, trauma, mental health issues and all. So can you tell me any real-time case study that was completely magical? uh, my clients and things are very confidential, so I can't discuss like वैसे चीजें. Yeah, so that way it's a little difficult, but I can tell you, a lot of people realize, successful people, if we speak about entrepreneurs for example, ठीक है, entrepreneurs, they don't realize that they try, or they tie identity to output. So for example, most business anxiety is not about money, it's about self worth. क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं. So वैसे सिचुएशन से हम बाहर आए हैं कि आप एक one step at a time लो, आप figure out करो, things like that. But other than that, वो चीज, it's a little, because there is 100% confidentiality when I work with a client. तो वो चीज तो it's a little difficult. Sorry about Yeah, that. yeah, I totally हाँ. understand it. I totally understand, no problem. जैसे आप कपल्स की भी थेरेपी करते हैं, so what is the reason, main reason, common reason जिसकी वजह से कपल्स आपके पास थेरेपी के लिए आते हैं? uh, with couples, it's a lot of things, like we've discussed. It could be communication, it could be unspoken expectation, it could be some ego, it could be a lot of things. But more often than not, मैंने एक चीज notice की है, that people want connection but fear the vulnerability. आपको connection चाहिए सामने वाले से, but उसके सामने आपको भी उतनी vulnerability दिखानी पड़ेगी, right? आपको भी उतना ही deep down वो well में उतरना पड़ेगा. आप ऊपर से तो नहीं बोल सकते कि हाँ तू जा नीचे, मतलब तू कर ले figure out, मैं देख लेती हूँ. That's not how it works, right? You also need to take the same number of steps with the person. That is something that I feel is very, it's a little tricky these days वैसा. एंड ये चीज, एक और चीज है, दैट अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन. अरे वो समझ नहीं रहा है, क्या आपने कम्युनिकेट किया, लाइक हैव यू ट्राइड डूइंग दैट, हैव यू, हाउ हैव यू ट्राइड डूइंग दैट, आपने ओ ये हो जाना चाहिए, या तू नहीं करता है ये, इंस्टेड ऑफ सेइंग you always do this or you always don't do this. This is an example, or this is a trick that I give to my couple therapy people a lot, and it works. Instead of saying you always do this and this doesn't work with me, you need to start your sentences with, I feel a little sad when something like this happens. Can you please not do this? Do you not see the difference? जो Yes. हमेशा ये करता है, उससे ये ज्यादा कि यार मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा है ये चीज में, कैन वी वर्क दिस आउट, मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. जो सामने वाले रिसीविंग एंड पे है, दे विल ऑल्सो वांट टू, ओके फाइन, हर्ट हो रहा है बंदी को, लेट्स सी व्हाट एल्स कैन आई डू. वो पीओवी से आएगा. Okay. And let's suppose couples के बीच में like there is conflict हो रहा है हम्म. and they are seeking for therapy, but one of them, हम्म. एक उनमें से एक रेडी नहीं है, एक थेरेपी के लिए रेडी है, हम्म. राइट? सो हम्म. क्या इस केस में थेरेपी वर्क करेगी या फिर नहीं करेगी, लाइक व्हाट वुड हम्म. हैपन देन?
That's a very nice question. Actually, this happens more often than you know. So Mm, when one partner refuses therapy, you can't force growth, right? अगर yeah, आपको आपको भी मैं अगर ये बोलूंगी कि मोहित आपको ये नहीं करना चाहिए, बट आपको वो सेंस बनना चाहिए ना वो चीज का, फॉर यू टू एक्सेप्ट, लाइक वी जस्ट स्पोक, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर एक्नॉलेजिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग, बट वो एक्सेप्टेंस नहीं है, तो एक्शन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा. So it's the same thing that way. You can't force growth. If one partner isn't ready, you can do this. If one partner isn't ready, you start individually. आप आप खुद पे काम करना चालू करो. थेरेपी तब वर्क करती है जब विलिंगनेस हो. आप में विलिंगनेस है, आप चालू करो. और व्हेन वन पर्सन improves इमोशनल रेगुलेशन, अगर आप अच्छे से थेरेपी में वर्क करके अपने आप पे वर्क करना चालू करोगे, तो वो कम्युनिकेशन थोड़ा तो शिफ्ट होगा ना, बिकॉज योर yeah, एक्शंस विल चेंज अ लिटिल. वो सामने वाले बंदे को या बंदी को रियलाइज होगा कि ओ ठीक है, if he's doing his part or if she's doing her part, I also want to, because I want to be with this person. Correct? I अगर बंदे या बंदी को काम करना है आपके साथ, रहना है आपके साथ, then they will also put in the efforts. So I think a realization will come in a little later, but you can't force at that point of time. okay, got it. एंड आपके हिसाब से लाइक हेल्दी रिलेशनशिप के कौन से ऐसे 3 पिलर्स या फिर चार चार पिलर्स हैं Hmm. जिनको कपल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? Okay, three according to me, and this is या just me. Obviously, it is different for a lot of people, but या for me, three non-negotiable relationship pillars. My first is emotional safety. मैं बिना डरे, बिना सामने वाला एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, वो फियर के बिना कम्युनिकेट कर सकती हूँ, एक्सप्रेस कर सकती हूँ. अगर मुझे कोई चीज नहीं अच्छी लगी आपकी, तो ऑब्वियसली कीपिंग रिस्पेक्ट इन माइंड, कीपिंग लैंग्वेज इन माइंड, मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि मोहित तुझे ये चीज थोड़ी बुरी लगी, कैन वी टॉक अबाउट इट. एग्जाम्पल. सो इमोशनल सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सेकेंड थिंग इज रिस्पेक्ट. डिसएग्रीमेंट होना इज द मोस्ट नॉर्मल थिंग एंड द मोस्ट हेल्दी थिंग, बट उसके साथ डिग्निटी नहीं जानी चाहिए सामने वाले की या आपकी भी इन दैट कम्युनिकेशन. सो रिस्पेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. एंड थर्ड थिंग इज कंसिस्टेंसी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपके वर्ड्स और एक्शंस अलाइन होने चाहिए, एंड सेम विद द अदर पर्सन. हाँ, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, बट अगर ये नहीं हो रहा है, देन इट्स ऑल फेक प्रॉमिसेस. यू आर नॉट पुटिंग दैट वर्ड्स इनटू एक्शन, राइट? एंड फिर वो सामने वाले को लगेगा कि यार मतलब आप बोल रहे हो बट कब. सो दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इमोशनल सेफ्टी, रिस्पेक्ट विथ ईच अदर ऑब्वियसली, एंड खुद का रिस्पेक्ट भी, एंड कंसिस्टेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड नाउअडेज अ लॉट ऑफ डिवोर्स आर हैपनिंग, राइट? हम्म. पहले के टाइम में स्पेशली इन इंडियन मार्केट इतने ज्यादा डिवोर्स नहीं होते थे. आज के टाइम में काफी सारे डिवोर्स हो रखे हैं. एज यू आर हम्म. आप थेरेपी लोगों को थेरेपी देते हैं, सो यू कैन टेल मी मोर बेटर अबाउट इट. व्हाट इज द हम्म. रीजन? क्यों अगेन इट्स अ आजकल लॉट. ये? या It's again, like I said, human behavior is one person to one person. या It's not dolo 650 के दे दे और आप ठीक हो जाओगे. So it depends. It is tricky. Some people, it's that unspoken expectation. ये समझता नहीं है. आप ट्राई करो कम्युनिकेट करने की. Some चीजें are very egoistic कि मैं बोलूँ यही होना चाहिए, my way or highway. But two people में it doesn't work that way, right? As soon as there's one more person, I understand आपकी individuality है, but then you also have to meet halfway, no? दैट इज इम्पोर्टेंट. वो कभी कभी वो हो जाता है, वो आप अपन कनेक्शन में वी स्टॉप. कभी कभी ये हो जाता है कि हम अपने आप को छोड़ देते हैं. ठीक है, जैसा आप बोलो, जैसा आप बोलो, जैसा आप बोलो, एंड देन एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि अरे यार मतलब मैं तो थी नहीं इसमें, मैं कहाँ हूँ. दैट इज दैट. सो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो इट हैज टू, आई थिंक, as soon as it goes from partnership to power struggle, that is where the garbage starts. You have to remind yourself and you constantly put in the efforts that it's a partnership. कौन मैं ऊपर ऊपर. That is a, it goes a little difficult. It gets a little difficult. या एंड I जैसे hope आपने my बताया. answers are making sense. And ऐसा या वो. हाँ. या जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया था, देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स व्हेन इट कम्स टू लाइक थेरेपी. सोसाइटी में हम्म. काफी स्टिग्मा है. लाइक ओपनली लोग बात भी नहीं करते हैं मेंटल हेल्थ हम्म. एक्सपर्ट से डिस्कस करना, या फिर हम्म. फ्रेंड सर्कल में इसके बारे में बात करना. बिकॉज समटाइम सोसाइटी में तो लोग बोलने लगे, अरे ये तो पागल हो गया, ऐसे करके बोलने लगते हैं, राइट? Yeah. सो व्हाट आर अदर मिथ्स जो मेंटल हेल्थ थेरेपी के अराउंड आपको सुनने को मिलते हैं दैट इज कम्प्लीटली बुलशिट? One तो obviously like we said पागल लोगों के लिए, that is या ridiculous. There's one more thing that says therapy is for broken people.
A broken person or a broken human being will not have the capacity, correct? So it's not for broken people. Therapy is actually for self-aware people who want to put in the efforts and who want to optimize their emotional performance. अगर आप में awareness है तो आप कर पाएंगे. So I think therapy is for smart people. Therapy is for people who are aware. अगर आपके हिसाब से therapy is not the right thing, then you need to work on your self-awareness a little. Yeah. And What do you think? Is about, therapy good or bad? is it good? Everyone should learn about himself or herself. उनको Correct. खुद के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द इमोशंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम व्हाट आई फील, नॉट समटाइम, ऑल द टाइम, दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट दिस, कि हम फिजिकल हेल्थ पर, जैसे आपने बताया, बहुत फोकस करते हैं, जिम भी ज्वाइन Correct. कर लेते हैं और जिम करने में हमको शर्म भी नहीं आती. बट व्हेन इट Correct. कम्स टू मैनेजिंग इमोशनल चैलेंजेस, people are afraid to talk with emotional health expert, mental health expert, therapist, psychologist. दे इग्नोर इट. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो बाद में आती है, पहले मेंटल प्रॉब्लम्स ही आती हैं. स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगी, जिसकी वजह से Correct. हमारा पूरा बॉडी डिसऑर्डर होगा, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्ड होगा. जब खाना नहीं Correct. पचेगा तो देन कॉन्स्टिपेशन इज गोइंग टू बी देयर. इफ Mm. कॉन्स्टिपेशन इज देयर, Sleep देन issues. स्लीप इश्यूज आर गोइंग टू बी देयर. इंसान ना सो रहा है ना, लाइक दैट पर्सन हैज कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल. अगर ये लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है तो फिर फिजिकल चैलेंजेस आने शुरू होते हैं, एंड उन Correct. फिजिकल चैलेंजेस की वजह से रिलेशनशिप भी खराब होती है Correct. और ज्यादा, क्योंकि पैसा खर्च हो रहा है उस इशू को सॉल्व करने, रूट कॉज पर तो काम नहीं किया जा रहा है, ऊपर ऊपर से उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही Correct. है, एंड Hmm. उनको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. सो समवेयर इफ एनी पर्सन हैव टू लिव हैप्पीली, Hmm. either it is health, relationship, financial situation, everyone should work on their emotions. Correct. It goes They hand in should, hand. yeah, they Hmm. should work on their mental health. So Yes. this is what I think. If they Beautiful. truly, Very truly want to nicely live a, explained. Yeah. yeah, Very nicely explained. Yes. yeah, thank you. So, Bhavya, you are a human also, right? Correct. तो एज अ ह्यूमन आपको भी ऑब्वियसली इमोशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे डे टू डे लाइफ में. Correct. सो हाउ डू यू डील विद इट? How I deal with my emotions? या. Uh, for me, it's a very simple thing. If I'm having a conversation, पहली तो चीज, और सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है मुझे जो मुझे इट्स नॉट सिटिंग वेल विथ मी, आई फर्स्ट थिंग इज आई डोंट टेक इट पर्सनली. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, इट मेक्स सेंस टू यू, आई गेट इट. बट इफ इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी, तो फिर मैं अपने आप पे नहीं लूंगी कि मेरे को कैसे बोल दिया. इट्स ओके, आपको ठीक लग रहा है, आपने बोला. सो दैट इज समथिंग. आई हैव बाउंड्रीज. आई दैट्स हाउ आई स्टे बैलेंस्ड. आई हैव क्लियर कट वेरी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज. समटाइम्स हो जाता है कि मुझे बुरा लग गया क्योंकि एक्सपेक्टेशन रहती है कुछ लोगों से, तो तभी it gets a little difficult, but then I also have to come back to the reality that it's okay. सामने वाले ने बोला, it's fine, not the end of the world. So boundaries is something that works, and because मेरा profession भी ये है, so and I hear a lot of things, and I am always very emotionally in tuned because I have to help people and I have to uh, navigate people. Rather than helping, for me it is navigating people to help them be the better version of themselves and everything. So for me, yeah, that gets difficult. And as soon as it gets difficult, I take a pause. This is something that I do very religiously. Even if I'm fighting with somebody और वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है मेरे लिए, मेरे understanding के लिए at that point of time, rather than replying in that fit of anger या that fit of "तू क्यों नहीं समझ रहा है या समझ रही है for that matter," I take a pause. I tell them, how about this? मैं नहीं कर पा रही हूँ explain अच्छे से. Can you give me some time? मैं I'll sit with it. I'll sit with this feeling, this emotion. क्या आ रहा है मेरे दिमाग में? मैं अच्छे से फ्रेम करके फिर आपसे बात करूंगी. एंड इट इज ऑल दैट इज ऑलवेज अ बेटर थिंग टू डू rather than इन दैट इमोशन बोल के, क्योंकि आप योर वर्ड्स हैव पावर, राइट? अगर आप बोल दोगे और बातें बिगड़ जाएगी तो उससे अच्छा टेक अ सेकंड, पॉज ले लो. नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर सामने वाला आपको समझ रहा है, अगर सामने वाला आपकी बात को वैलिड समझ रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, तो दे विल अंडरस्टैंड कि ठीक है, या वी कैन कंटिन्यू दिस लेटर. ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, करेक्ट? So emotional wise, if it's getting a little too much, I generally tend to take a break, take a pause, and I tell them, okay, give me 2 hours, yeah, give me a couple of minutes, let me calm down, let me think, and I'll get back to you. And that always works. एंड यू नो व्हाट हैपेंस, लाइक जो लोग इमोशनली वीक होते हैं, दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड विद मेनी Hmm. पीपल. इमोशनली वीक पर्सन, इफ दे आर इन रिलेशनशिप और दे आर Hmm. मैरिड और समथिंग,
इमोशनली वीक पर्सन क्या करेगा? इफ एनीथिंग इज हैपनिंग, चाहे वो Hmm. मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेट्स सपोज Correct. ये फीमेल की साइड से कोई प्रॉब्लम हो रही है, लाइक कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया है, या फिर जैसे डेली का रहता है कि हम 7 बजे बात करते हैं, 8 बजे बात करते हैं, तो सडनली 1-2 दिन से कॉल नहीं आ रही है। ओके, तो Hmm. जो इमोशनली वीक पर्सन होगा, दैट पर्सन विल स्टॉप स्टॉप अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, जानने की भी कोशिश नहीं करेगा, दैट पर्सन विल जस्ट सी कि उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। Hmm. And without having the communication conversation, things will Hmm. start getting worse. So Hmm. sometimes I feel like having Hmm. strong emotions is very important, because it is Hmm. just not about कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने वाले की, हो सकता है सामने वाला इंसान बिजी भी हो, काम कर रहा हो, यू नो Correct. देयर आर सो Hmm. मेनी थिंग्स, तो कॉल नहीं आया, या फिर नहीं पूछ पाया, फिर मैसेज नहीं कर पाया, एंड इसी की वजह Hmm. से काफी काफी सारे लोग जो इमोशनल रिलेशनशिप में इमोशनली वीक हैं, Hmm. they face a lot of challenges in their relationship, I isn't don't it? think it is only emotionally weak. It is also about the fact कि वो थोड़े anxious as a person भी हो सकते हैं. Okay. One. So if and see, you also have to understand, as in you, as in not you, like people in general have Yeah. to understand कि अगर वो चीज once या twice हो, then it is understood. But if it becomes a pattern, then that is not right for the person who's at the receiving end also. आप कभी busy हो, I understand कि आप you didn't reach out या 2 दिन नहीं हुआ. But then third day you also have to put in the efforts to make the other person understand, I'm really sorry, 2 दिन availability issues थे because this. But now and onwards, I'll take care of it, or I'll be more mindful, or things like that. So when there is a balance, that emotionally anxious person also will try and put in the efforts that नहीं मेरे को बताया था, today I'm not going to panic, let's just drop a message instead of hyper होके, oh you तो don't have pay attention to me, you तो don't love me, you तो this, you तो that, ये करने से better that person will also take a step back saying नहीं मेरे को बताया था last time कि next week थोड़ा busy जाने वाला है, तो मेरे को hyper नहीं होना, let me just drop a message, hey just thinking of you, please let me know when you're busy or when you're free, or call me for like 5 minutes when you're free, things like that. But that will also वो सामने वाला person भी कर पाएगा जब आपको थोड़ा रियश्योरेंस या थोड़ा कॉन्फिडेंस दे उनको. सो आपके साइड से भी अगर वो पैटर्न हो रही है, then it's a different ball game. But obviously, once in a blue moon is a different situation. Then the person in front of you has to understand कि अगर ये पैटर्न नहीं है बंदे की, then he really must be busy about something. So that is where communication comes into the picture. I feel as soon as it is one person, could be parents, could be siblings, could be relationship, could be husband, wife, could be boss, anybody. As soon as there are two people, communication and comprehension makes so much of difference. Right Mm, communication, effective communication makes so much of difference. Like तू यही करता है इससे ज्यादा मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा है, makes a difference. So right communication works. बिल्कुल. So what's your vision for 2026, or for next 2 years or 3 years as a mental health expert? Uh, nice question. I haven't really thought of it as a vision, but yeah, grow the practice that I have. I have a private practice where I help people, so grow that and help more people, and hopefully yeah, just grow. That's the whole thing, because I don't want to close myself if there are new opportunities coming, like this podcast. It came out of nowhere and it's working beautifully. So Mm, growth, that's the whole part. yeah, very nice. And if somebody is facing any challenge, mental health problem, Hmm. anxiety, depression, or they are facing Hmm. any kind of relationship issues and they wanna reach out to you, so can you just tell me your Instagram handle or something, like how exactly they can contact you? There's this Instagram page that I have. It's Therapy with Bhavya, TherapyWyWyBHAVY So Therapy with Bhavya करके there's this Instagram page where they can contact, and yeah, let's see how it works. So Do you yeah. offer any clarity call or something? Sorry? Do you offer any clarity call to those people who reach out to you? Clarity Yeah, there call. is obviously it's a process where अगर आपने reach out भी किया है तो I'll reach out, we'll speak about it over the text, get a little bit of an understanding, and then we take it ahead. ऐसा नहीं है कि वो because you reached out आपको session लेने की जरूरत है ही, या आप you have to take a session. It's not like that. We obviously there's a little bit of clarity, conversation, communication. Where are you coming from? What problems are you facing? All of that happens, and then we start with sessions. Okay, very nice. So, guys, if you are looking for the solution, obviously you can reach out to Bhavya if you are facing any mental health issue, anxiety, depression, or any kind of, like, you feel that you are emotionally weak, you wanna be emotionally strong person, and
If you are facing any issue in your relationship, then definitely reach out to Bhavya. She definitely can help you. And Bhavya, thank you so much for your time. No It was problem. lovely talking to you. You have shared a lot of insights here. So thank you so Yes. much. Have a great day. You too have a great day. And sorry, one last thing. It's never emotionally weak. It's wanting to work on yourself to get better. Yeah, We don't call people weak or strong. We call with awareness. We call with efforts. Yeah, that way. So you're not emotionally weak. Nobody is. Nobody is. You're all strong people. You're all just that hunger or that want to be better. That is more important. yeah, So yeah. absolutely. Thank Yeah. you. Thank you so much. Have a Thank you good so day. much.